सारी कुछ जी मैम प्लीज जी मैडम सामने भाई हिला नहीं यार आ जाओ यहाँ से शुरू fed to the monster. So Perseus slays the monster and saves her, and they live happily ever after. The castle. This is Perseus slaying Medusa. This is a alien like and then they This was their name. Respected dignitaries of the parents, Secretary Culture, Javed Rahiji, and today's limelight, the chief guest, I would call Rahul Yajur. He is today the main showcase, what we need to project. First and foremost, congratulations Yajur. It's great when you find the youngsters taking such an initiative. Talking about art and culture, I think this is one of the fields where you can, it's a limited field because very few parents and the children themselves would opt for this field. So finding a youngster who is pursuing his dreams, what he really intends to do, and the support of his family, hats off to his family also, the relatives also, whom I can see here. They are I can see the enthusiastic faces here, how happy and proud are they today to find one of their family members, their child on the dais here, who has their sincere efforts. He is able to showcase something. This solo exhibition there. I would also congratulate Javed Rahi sir also and the culture department as a whole for providing such a platform to the youngsters, whereby they can showcase their talent. We have provided them an opportunity, and it will be, many more children after looking through, coming and visiting today's whatsoever his galleries, his paintings are there. It would encourage them also to pursue, to undertake such an art. So that is something very motivating. Thank you, Javed sir. And for Yajur also, we are not yet inaugurated the exhibition, but I am sure that it would be very nice. Something which he has done from his heart. It would be the best from his side. You cannot judge the creativity of anyone. It matters from person to person. It is his point of view, it is his creativity, it is his thoughts. You cannot just enter into his mind, but after looking at the picture, you will try to have a glimpse of. उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। उन्होंने ये अपनी पढ़ाई के दौरान ये भी एक लर्निंग है, अपने काम को करना और एग्जिबिट करना, और ये किसी भी कलाकार के लिए ये उसको सीखना ही पड़ता है, और ये इन्होंने इस स्टेज में सीखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगता है कि ये आगे भी इनको और बेहतर ढंग से सीखना है। और अभी मैंने इनका काम दिखा नहीं है, कॉलेज में आए थे तो उन्होंने 2 दिन काम दिखाए थे, तो उसको कर रहे हैं, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इनके पेरेंट्स को, इनको जावेद जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, और हमारे जो जम्मू के
मैं तो इतना कनेक्टेड नहीं थी उनके साथ, तो जब मैं कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ के दौरान मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स की यहाँ एग्जीबिशन हुई, तो ये कितना इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि नूरवीर खाल कर लाया ना लोगों ने फाइन आर्ट्स पुणे महाराष्ट्र देखो मेरा कुदर है स्टेट टाइम कुदर है मैथोलॉजी को अपना बेसिक बनाया है, कंसेप्ट है इनपे। He has joined नूरवीर सारी बाइट खराब कर रही है concepts along with Greek mythology. He has tried to add modernity with his ideas with the Greek mythology जो इनकी stories है, and he has made different, you can see the portraits here, different color scheme use की है, different इसमें आपके different stories हैं. It's a wonderful platform which I think that Kala Kendra and the Secretary Culture has given him, the culture department. ऐसा कहीं भी बच्चों को, जितने भी बच्चे यहाँ जो फाइन आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शोकेस देते हैं. This would encourage the children back there also, the other students who want to pursue this as a career, who want to pursue their dreams. Such an exhibition will motivate them also that we can also do. And there is no limit to creativity. Everyone should be given due freedom to do that. A request to the parents and the teachers back there also to encourage and motivate each child with his creativity. थैंक्स टू कल्चरल अकेडमी और थैंक्स टू कला केंद्र ने बुलाओ क्या पेंटिंग्स लगाने के लिए. ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है, जो उनकी पुरानी स्टोरीज होती थी, जो सारे माइथोलॉजी में हीरोज होते थे, जो उनके गॉड होते थे, उनकी स्टोरीज है. और मेरे को नहीं लगता कि जम्मू में पहले किसी ने ग्रीक माइथोलॉजी में एक्सप्लोर किया होगा, बिकॉज यूजली हम इतना ब्लाइंडेड हो जाते हैं कि इंडियन सोसाइटी मतलब जैसे इंडियन कल्चर पर सोनी पेंटिंग वगैरह हम बचपन से देखते आ रहे हैं. तो मैंने सोचा कुछ नया करते, कुछ जो लोग देखें जैसे थोड़ा इंस्पायर हुए. तो वही एग्जीबिशन है, आप सारे आओ. 3 दिन की एग्जीबिशन है, आज से लेकर